Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. And this is a lecture about hetroscedasticity, which we are having discussion on multicollinearity earlier. And there are three problems of econometrics which we are going to discuss. One is multicollinearity, which is already done, and now I'm working on hetroscedasticity. And the next topic would be autocorrelation. So these are the three topics which are included into your final exam syllabus. So have a look on it. First of all, we will see that what is heteroscedasticity. So these are the questions which we'll try to answer working with this chapter. What is the nature of heteroscedasticity? What are the consequences? How does one detect it? And what are the remedial measures? And so if we start with the what is heteroscedasticity, so it is all about the violation of one of the assumption from CLRM assumption, which is classical linear regression model assumptions, which were seven in total, and we will be discussing that one by one, that if those assumptions are violated, then how would my OLS regression estimation will be affected. So we already discussed with the concept of multicollinearity and the related issues with multicollinearity. Now we are working on heteroscedasticity. So if you remember, we had an assumption that variance of the error term ui is a constant. And if this is violated, then it is called heteroscedasticity, and if it is not violated, then we say it's homoscedasticity. So what we expect that the variance or and if you remember, variance of ui is taken as you can see from this formula, variance of ui is taken as expected value of ui square, and it is supposed to be constant when I is varying from 1 to n. And you remember that I ki variation were taking place on over I. So if we have x1, so practically variance of related to x1 for the random term. So what we are actually saying that there is x1 and there are some observations at x1, and those x1, out of those x1 there is an average value which is being explained by a regression line, और बाकी जो है उसके ऊपर and you can see in the below there are some variation which are not explained, creating UIs, and there is a variability of the values of UI, and what we are assuming that this variability, which is measured through the variance of UI, has to be constant. So that means that if we are taking x1, the variability of UI is the same as that of if we are taking x2, then the variability of x UI is same. So there are UIs consistent with every xi value, and we are assuming in homoscedasticity that if we are changing x values, x1 to x2, x to xn, each x value correspond to some ui values, and those ui values should have constant variance, then it is called homoscedasticity. But if we look at the practical scenario, it does not happen that this variance should remain the same. It depends on the nature of the problem, that in some of the problems we have the variability of the variance of ui, and that is called heteroscedasticity. It exists by nature, but what the consequence is that we cannot apply OLS technique to the data which does not have homoscedasticity. So the first thing we have to see that what are the reason that we have variability of UI or heteroscedasticity problem. So let's go through the pages of the book and see. So look at this picture. This shows that when all the xi's, can you see this? Look at my cursor. This is the first value x1, this is the second value, this is third value, and correspondingly these lines representing the variation over y. And then what is happening that you can see the distribution of ui term. Out of these y value, the regression line is predicting only the average value at which you can see the line. The line is explaining the relationship, and उसके अलावा ऊपर और नीचे जितनी value that represents ui. So variability is defined by this distribution, and you can see the shape of this distribution is constant over xi value. This is called homoscedastic distribution. Whereas in the next one, you can see that the peaks are different for all the
xi for all the variances of ui's corresponding to different values of xi. So ये जो highest peak है that shows the lowest variance and the flattest peak shows the highest variance. So variability of the variances of ui is there in this figure. Now let's see what are the reason and what is the way of writing this, that we are saying in the previous case when it is homoscedastic. So we have expected value of ui square is equals to sigma square, whereas when we have expected value of ui square is sigma square I. Can you see the subscript I, that I is representing that as x values of x are changing, so correspondingly you are going to have different value of variance for every expected value of xi. So that's called hetroscedasticity. Okay, next thing is that we have to see that what are the reasons. So there are several reasons that this hetroscedasticity can occur. So what are these reasons? First, the error learning model. Now what is error learning model? Suppose that I'm quoting the example which is given in the book. Suppose करें कि if you are working on a typing, if you are practicing typing, and if you spend more hour of typing, what do you expect, that would you have the same number of errors which you do while typing, or will it reduce? So answer is that definitely it will reduce. So that shows that the variability or the variances of the random term, that random term shows the errors, it will reduce. So we are imagining that over time, as typing practice keeps on going, the variability of the error may reduce. So that is called reducing variances of UIs. So of course that shows that variance has to be reduced, should not be constant. So heteroscedasticity occurs by nature. Second is that we worked out with the consumption income relationship many times in the class. And suppose that if income grows, do you expect that a person who is earning 10,000 rupees versus 20,000 rupees versus 1 lakh rupees versus 2 lakh and 10 lakh and 15 lakhs, would they have the same variability of their consumption? And imagine there is a line which is explaining the relationship between consumption and income, and that is just telling you one point, but of course the data does not represent only one point, but it has a disparity. So do you think the disparity of the consumption, the variation of consumption, would remain the same across these income groups? Matlab the disparity of the people are consuming more than average or less than average for the people who are earning 10,000 rupees is exactly same as the pattern of the people who are earning 1 lakh rupees. Of course there must be a difference, and that if there is a difference, then the variability cannot remain the same, and variability actually will increase as income go up. So here we are talking of a case where the variance of ui square will increase. I can ask the questions that why does this variability of ui, variance of ui exist, and in what cases you are expected it to rise, and what are the cases in which you expect them to fall. So you have to come up with these examples, that in a typing example it is expected to reduce, in a income disparity example it is expected to rise. So you have to think logically that how come variability should not remain the same, and if it is not same, either it increase or it may decrease. So what are the cases where it will increase and what are the cases where it will decrease? Let's move on to the third. The third is data collection technique. So simple is that if you are not doing the random selection of the data and you are biased somewhere, so you are expected to have some variability of UI issues, and that create the heteroscedasticity problem. Now look at this figure, what it says. Hours of typing practice and typing error. So this is the data for the first example I quoted, and can you see that variability is reducing? एंड ये लाइन देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है? इसका जवाब सोचे, ये नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए. एक्स एक्सिस पे है आवर्स ऑफ टाइपिंग प्रैक्टिस और वाई एक्सिस पर है टाइपिंग एरर्स. तो मुझे बताएं कि ये रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और उसकी वेरिएबिलिटी कैसी होनी चाहिए. डू यू थिंक दिस फिगर इज करेक्ट? ये सोचना है आपने, क्योंकि मैं ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में करूंगी. उसके बाद है नेक्स्ट, हेट्रोस्कैडिसिटी कैन ऑल्सो राइज एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स. तो ये एक डाटा रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से आपकी हेट्रोस्कैडिसिटी अकर कर सकती है. सो व्हेनेवर यू फाइंड थ्रू द टेस्ट दैट हेट्रोस्कैडिसिटी इज देयर, तो आपको यू ट्राई टू फिगर आउट द रीजन. तो वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच वी हैव टू वर्क आउट इज दैट वेदर द डेटा हैज आउटलायर और नॉट.
And by the way, when we start OLS regression, there are some pre-work which we have to do, and it contains also working with the outliers. Okay, if there is an outlier, then you will have to check it out and you have to deal with that. Just like this diagram shows, this country child has is an outlier in that particular data. So moving on, type number 5 reason is another source of heteroscedasticity arises by violating assumption 9 of CLRM, namely that the regression model is correctly specified. This is a really important point. If you're generally what we do, that we write, well, y is equals to alpha plus beta x plus blah blah. So just mostly we recommend a linear equation, but that does not necessary that the model should contain like all x in linear form. It is quite possible that you may have the square, yani quadratic form, whereas you are indicating it as a linear form. So that is misspecification. This is one kind of misspecification. The second kind of misspecification could have been that you need to incorporate some of the important variables, but you have not incorporated it. Let's focus on the second one, which is more important. Okay, if you had to incorporate some of the variables and you deleted it, or you mistakenly have not incorporated it. For example, if you're working with the demand analysis and you're working with demand equation, and you said the quantity demanded is a function of price, income, and price of the substitute, price of the complement, and that's it. Now suppose this is your actual model, and what you estimated, that quantity demanded is a function of price, income, and you missed out the price of substitute and price of complement, and the product was so much into the situation where it has a very close substitute, and it is having an influence of the quantity demand of that particular product. So what will happen, that once you will take the data from market for the quantity demanded of the product, so and you are not specifying prices of substitute and complement, so what will happen, that dependent variable may contain the effect of the missing variables. आपका dependent variable जो होता है ना, it is being explained by independent variables, and the independent variables which should have been incorporated are 4, लेकिन आपने 2 किए. अगर आपने 2 किए तो वो 2 जो बाकी the remaining 2 which are being missed out actually are influencing quantity demanded. So what do you think, where the effect of those variable will go? Anything which does not appear as an explanatory variable go into the residual. Now what is happening, that the effect of the complementary and substitute price, which is an independent variable explaining quantity demanded of a product, is going into U, and now U contain a variable which is changing systematically. Remember, U is a random term which does not change systematically. It is erratic, it's random, whereas xi's are systematic. Now some xi's which has to be incorporated in your model and you miss them out, definitely will go into random term. So your random term will become systematic, and that will create the problem of heteroscedasticity. There will be a pattern of the random error you will see. And the next point is, another source of heteroscedasticity is skewness in distribution of one or the more regresses included in the model. So you can see that if there is skewness in the distribution, and there is a ways of detecting whether the variables are skewed or normal, जो हमने किए थे बॉक्स प्लॉट NNP और इस तरह के skewness kurtosis methods to detect that whether the model data has skewness or it is symmetrical normal distribution. So these are the reasons behind existence of heteroscedasticity. So now we have to discuss that if there is a heteroscedasticity problem, so how would OLS estimation will respond in that case. So suppose there is heteroscedasticity. Look at this formula. This formula is E of ui square is equals to sigma I square. It's just a presence of heteroscedasticity, and this is the model we want to estimate. Suppose heteroscedasticity. So when we come to the formula of calculation of OLS estimator, the formula for betas are same, but we comes to see this variances. So we can see that the comparison of variance in case of heteroscedasticity and without hetero. So 11.2.3 is a variance without hetero, and 11.2.2 is the formula with hetero. So you can clearly see that the variance has increased.
and you know that when variance increases, it will affect all the formulas where we use the variance of betas, and definitely you can imagine that t value is going to be affected and f value is going to be affected. So as variance of beta has enlarged, so practically now the new model with heteroscedasticity, if it is estimated through the OLS technique, will not be blue. It is blue is best linear unbiased estimator. It is linear, it is unbiased, but it is no more best. And you know the meaning of best is minimum variance. So OLS estimator contain minimum variance, but in the case of heteroscedasticity, the OLS estimator variances will not be minimum anymore, but it will enlarge, and that an increase in variance of betas would definitely going to affect T and F value. So that is actually going to affect the test of significance and the confidence interval. It is the test of significance and the confidence interval is no more reliable in the presence of heteroscedasticity, and if the model is estimated through the OLS estimation technique. So now the question arises that how we are going to estimate, how can we estimate the coefficients when the model contains the heteroscedasticity. So answer is the method is generalized least square. Now what is GLS? GLS is basically applying OLS on a transformed model. Now what is transformation of the model and how we transform it? Well, actually we will transform a model in such a way that the new model will become will contain the variance of UI as homoscedastic. So once your variance, yani variance of UI has constant variance in homoscedastic, then we can apply OLS on that transform model. So application of OLS on a transform model, and the transformation is done just to get rid of heteroscedasticity, is called GLS, generalized least square. Now look at this. This definition is already there. So if you just have a look at the model, GLS model, so you can see this is a model, the original model which we were working earlier, and this model is a simple OLS model, and this UI has heteroscedasticity problem. Variance of UI is equals to sigma I square. Now what kind of transformation is done? Now transformation करने के लिए the most important thing is that there are two possibilities. One, we have sigma square as known, sigma square form is known, or sigma I square is known. Second is that sigma square is not known. When sigma square is known, then transformation is possible. So look at this model 11.3.2. What they have done, they have introduced some x naught star x naught I ऐसी, और इसको that this value is equals to 1, so we can put it right here just to get us transformation of this model. And then once we introduce this variable, then what we are doing, since sigma square, as you know, this heteroscedastic variance sigma square is known. So if it is known, its value is known, so what we are going to do, that we are dividing the entire model with this sigma square on the left side and on the right side. So what we'll have, we call this yi over sigma I as y star. Similarly, all these variables are transformed into x stars and u star. Now look at this u star. What is the special thing about this u star? It is not ui. Ui is that random term which contains heteroscedasticity problem. Whereas we have to see that once we transform the model, does it has the heteroscedasticity problem or not? For that, there is a little manipulation of ui star we have to do with. So look, check out with the variance of ui star. Is it a constant number or is it still a variable? If it is a constant number ui star, variance of ui star, then problem of heteroscedasticity has gone, and now we can apply OLS on this model. But if the variance of ui star is again a variable, so this model still has the problem of heteroscedasticity. So to check the variance of ui star is a constant or not, the most important thing is that we should calculate the variance of ui star. Now look at these lines. We have calculated the variance of ui star, which is nothing but e of ui star square, because you know कि ये ui जो है ये unbiased है, तो expected value of ui star भी 0 होगी. तो फॉर्मूले के अंदर वो चीज जब 0 हो जाती है, then we have this formula.
Now what is ui star? As we know that it is just ui over sigma I, यहाँ से हमें पता है. So we just substitute this value ui over sigma I and we are taking expectation over this. And you know that when we have this kind of expectation is applied on a random variable and sigma square will be taken out. So if we take sigmas out, so that the simple sigma will not be out but the square of the sigma will be out. So 1 by sigma square is here and expected value of u square is here. And you know that expected value of u square, as it is variance of ui for this model, is sigma I square, which was heteroscedasticity variance. So if we just put the value of sigma I square here, so that is deleted, and at the end what do we have? The numerical number 1. So what 1 represents? Where 1 is the variance of ui star, and ui star का variance जो है वो एक constant number आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएंस कांस्टेंट आने का मतलब है द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी हैज गॉन. नाउ व्हाट यू हैव डन, एक्चुअली आपके पास एक मॉडल था जिसके अंदर आपका यूआई स्टार जो था वो हेट्रोस्कैडेस्टिक प्रॉब्लम के साथ था. आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नोन थी. आपने पूरे मॉडल को करेक्ट कर दिया सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करके. जब डिवाइड किया तो उससे क्या हुआ, तो जो हमारी ट्रांसफॉर्म मॉडल आई उसके अंदर जो रैंडम टर्म है उसका वेरिएंस जो है कांस्टेंट हो गया. और यही तो प्रॉब्लम है कि अगर वेरिएंस कांस्टेंट हो तो होमोस्कैडेस्टिक है, अगर वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो हेट्रोस्कैडेस्टिक है. क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्म मॉडल जो है उसका वेरिएंस कांस्टेंट हो गया तो द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी हैज गॉन. इसका मतलब है अब इस वाले मॉडल पे, कौन से मॉडल पे, 11 पॉइंट, ये जो मॉडल है इस वाले मॉडल पे, दिस मॉडल 11.3.4 जो कि ट्रांसफॉर्म मॉडल है, इसके ऊपर हम ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके वेरिएंस के अंदर प्रॉब्लम अब नहीं है. तो ये है जीएलएस मेथड. लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि जनरली पता नहीं होती. तो ये एक मेथड है जो कि, और ये जो जीएलएस मेथड है, अगर हम इसको थोड़ा सा और इसका ऑपरेशन करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो जीएलएस मेथड ही इज कॉल्ड डब्ल्यूएलएस. डब्ल्यू का मतलब होता है वेटेड. तो ये जो 1 बाई सिग्मा स्क्वायर है ना, इसको अगर हम सेपरेट कर लेना इसमें से, वैसे आपको इतनी मैथ्स की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप 1 बाई सिग्मा स्क्वायर को डब्ल्यूज कर देना तो एक्चुअली एवरी देखो ये वाई आई है 1 बाई डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाइड है, एक्स नॉट आई है ये 1 बाई डब्ल्यू सिग्मा आई से मल्टीप्लाइड है, ये एक्स आई है जो कि 1 बाई सिग्मा आई से मल्टीप्लाइड है. तो एक्चुअली एवरी टर्म हियर on in that side and that side is multiplied by some term which is 1 by sigma I. तो जो 1 by sigma I है we can take it as W, so the whole model will be converted in term of W. So that's why it's called, W is called weight and that's why it's called weighted least square, right? तो इसके दो नाम हो गए, एक जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, एक वेटेड लीस्ट स्क्वायर. ठीक है, तो मेथडोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे लेकिन ये एक मेथड है हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी में, आइदर यू गो विद जीएलएस और डब्ल्यूएलएस. ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग ओएलएस इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी. ये तो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी के केस में जो वेरिएंस ऑफ यू आई होता है वो एनलार्ज हो जाता है, जिससे कि जो टी वैल्यू, एफ वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो अनरिलायबल हो जाती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है. सो वी कांट रियली गो विद द एस्टिमेशन ऑफ ओएलएस टू अ मॉडल विच कंटेन्स हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी. ठीक है, और ये वही चीज है ओएलएस एस्टिमेशन रिगार्डिंग हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी कि अगर हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी का प्रॉब्लम हो और आप फिर भी ओएलएस एस्टिमेशन कर देंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा. सो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. इसको ये डिस्कस हम कर चुके हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. although we have studied that the case of heteroscedasticity it is a GLS not the OLS that is blue, there are examples where OLS can be blue despite heteroscedasticity, but such examples are infrequent in practice. तो ये एक छोटा सा नोट है टेक्निकल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव में क्योंकि हम बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएंगे. अब है नेक्स्ट टॉपिक की डिटेक्शन कैसे करनी है, पता कैसे चलेगा कि मॉडल में हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी है कि नहीं है. अब इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, अगर नहीं भी किसी को आता ना तो आप पहले सोचो कि व्हाट इज हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी. हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी इज नथिंग बट द वेरिएबिलिटी ऑफ द वेरिएंस ऑफ यूआई. इसका मतलब है यूआई की वेरिएंस को हमने चेक करना है. इसका मतलब है कि इट हैज टू डील विद यूआई. अब आपको पता है यूआई पॉपुलेशन का रैंडम नंबर है और विच इज नॉट नोन. तो नोन क्या होता है, यूआई हैड. इसका मतलब हुआ कि अगर हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी को मेजर करना है या उसको ऑब्जर्व करना है तो आप जिस चीज से डील करेंगे वो है यू आई हैड.
तो जितने भी मेथड हैं वो यू आई हैड के साथ काम करते हैं। अब कितने मेथड है? दो तरह के मेथड है, एक को हम फॉर्मल मेथड कहते हैं और दूसरे को हम इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल मेथड कौन सा होता है? वो ग्राफिकल मेथड होता है। हम ग्राफ क्या बनाते हैं? वी ट्राई टू स्टडी द पैटर्न दैट हाउ यू आई स्क्वायर इज चेंजिंग, राइट? नाउ व्हाट इज यू आई स्क्वायर? यू आई स्क्वायर इज बेसिकली द रैंडम टर्म, राइट? और हम देखते हैं कि जब यू आई है, यू आई किस तरह चेंज हो रहा है? जब वाई आई हैड चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ ग्राफ वी विल मेक इन विच on x-axis we will take y I had, or on y-axis we will take u I had, and we'll check the pattern of it. So look at this. This is nature of problem informal. ये graphical method आ गया. If there is no empirical information about the nature of heteroscedasticity, मतलब अगर आपको variance of ui मालूम ना हो, you do not know about the variance, in practice one can do the regression of the assumption that there is no heteroscedasticity, and then do the post-mortem examination of the residual square ui had to see if they exhibit any systematic pattern. तो ui hat square अगर कोई systematic pattern show करते हैं तो वो presence of heteroscedasticity को show करता है। अगर वो systematic pattern show नहीं करते तो इसका मतलब है heteroscedasticity problem नहीं है। तो हमने ग्राफ क्या बनाना है? हमने ग्राफिकल मेथड करना है तो ग्राफ ही बनाना है। तो ये है वो ग्राफ। देखो एक्स एक्सिस पे है वाई हैट्स और वाई एक्सिस के ऊपर है यू आई हैट। आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर। नाउ लुक एट दिस, there are 1 2 3 5 graphs which you think contains a pattern and which you think do not contain a pattern. So if you look at it, there is no pattern. If you look at B, there is a pattern. It's increasing. As y hat is increasing, u hat is increasing. Whereas in A, when a y hat is increasing, ui hat can take any number. So that's why there is no pattern. Whereas in this case, whatever the number ui hat is taking, but it is for sure that as y hat is increasing, ui hat is increasing. If you look at C, again the same is happening, but the pattern is different, that it is increasing and where it's constantly increasing. So this is a linear, C1 is a linear one and B is somehow kind of non-linear. Whereas A is the situation where ui hat do not have any pattern with regard to y hat. Now looking at this, again there are two patterns. The D is a curve and E is also a curve. The shape is different. This is inverted U shape, whereas this is concave. This graph is concave, increasing with increasing rate. So basically, all these B, C, D, E has spot pattern, whereas A does not have any pattern. इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ A में heteroscedasticity problem नहीं है, लेकिन B से लेके E तक में heteroscedasticity problem है। अच्छा, एक और चीज होती है कि ये जो बुक है वो ये बता रही है कि हमने पहले वाला ग्राफ बनाया था, यहाँ पर हमने y हैट रखा था और यहाँ पर हमने u हैट रखा था। तो जो इंपीरिकल स्टडीज है वो शो करती हैं कि अगर हम ये पैटर्न देखना चाहें ui हैट का और हम x एक्सिस पे x ही रख लें तो भी हमें वही सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हम y हैट रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x रख लें तब भी हमारे पास यही पैटर्न्स आएंगे। सो अकॉर्डिंगली द सेम थ्योरी इज देयर, वी जस्ट हैव रिप्लेस x एक्सिस फ्रॉम y हैट से x तक। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये कि दिस इज वैलिड फॉर ओनली बाइवेरिएट रिलेशनशिप। बाइवेरिएट का मतलब क्या होता है कि एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर आपका मल्टीपल रिग्रेशन है, उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर आप ये वाली चीज जो है x से रिप्लेस नहीं कर सकते। इन दैट केस यू वुड नीड टू नो विच x टू बी देयर। इसलिए इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग दिस कॉन्ट्रडिक्शन, बेटर टू प्लेस कीप इट एज y हैट इंस्टेड ऑफ x हैट। ये सिर्फ वैलिड है कब? जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। उसके बाद वी जस्ट ट्राई विद द फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड इज डन कि हम इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं और आई थिंक एवरीबडी कैन मेक द स्कैटर डायग्राम containing y hat on x axis and u hat on y axis, and they can come up with the different shapes the ui hat will take, and they can decide on the basis of that data that whether the date model has a hetero problem or not. उसके बाद है फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड एक नहीं है, 3-4 है। पार्क मेथड ये लिखा हुआ है, ग्लेस्टर मेथड है, हेनरी एंड क्वांट टेस्ट है, हेंडरसन एंड क्वांट टेस्ट है, और इसके अलावा ग्लेस्टर वाइट टेस्ट है। इस काफी सारे टेस्ट है, तो मैं आपको 1 से 2 बताऊंगी। एंड रिमेंबर, जब भी हम हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी के टेस्ट करेंगे, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, हमेशा हम यूआई हैट को मुख्तलिफ तरीकों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूआई हैट एंड वेरिएंसेस आर द सेम थिंग।
वेरिएंस ऑफ यू। तो पार्क टेस्ट क्या है, पार्क क्या कहता है, पार्क फॉर्मलाइजेस द ग्राफिकल मेथड बाय सजेस्टिंग दैट सिग्मा आई स्क्वायर इज सम फंक्शन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो पीछे ग्राफ है क्या बता रहा है कि यू हैट किसका सिंबल है, किसकी प्रॉक्सी है, सिग्मा स्क्वायर की प्रॉक्सी है ना। तो अगर आप एक्स के साथ रिलेशन ही देख रहे हो ना, तो अगर मैं सपोज करो ये सी वाला डाटा है, इसका मैं रिलेशनशिप बनाऊं, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो मैं लिखूंगी जी यू आई हैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, रिलेशन आ गया। और अगर मैं यू की जगह सिग्मा ही यूज कर लूं, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। सो एवरी ग्राफ हियर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल फॉर्म। तो ग्लेस्टर ने क्या किया, सॉरी पार्क ने क्या किया कि इन्हीं पैटर्न को फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर इसकी सिग्निफिकेंस को चेक किया। ठीक है, ग्राफ से देखने की बजाय इसकी सिग्निफिकेंस को चेक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ ना, अगर मैं ये वाला पार्क टेस्ट जो है इस वाले मॉडल के लिए बात करूँ, सी के लिए, तो ये बेसिकली है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब सिग्निफिकेंस का मतलब है कि मैं बीटा की सिग्निफिकेंस चेक करूँ कि क्या जीरो है या डिफरेंट फ्रॉम जीरो है। अगर तो बीटा जीरो आ जाता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, इसका मतलब है यू का और एक्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब है हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आपने इनफॉर्मली नहीं किया कि आपने सिर्फ एक ग्राफ देखा और जवाब दे दिया, आपने फॉर्मल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करके इसको आइडेंटिफाई किया है कि वेदर द मॉडल हैज हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी और नॉट। तो वो है जी पार्क टेस्ट। तो पार्क टेस्ट क्या कहता है, पार्क कहता है भाई जो आपका सिग्मा स्क्वायर है ना, जिसमें कि हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, वो एक्स के साथ वेरी करता है। तो ये फंक्शनल फॉर्म है जिसमें ये वेरी करता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यानी कांस्टेंट वेरिएंस इनटू एक्स आई बीटा ओ ई वी। अच्छा, इसको उसने लीनियरली, इसको लॉग से लीनियराइज कर लिया, दोनों तरफ लॉग ले ले तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इन पैरामीटर्स है ना, बीटा कांस्टेंट है, तो इसको हम ओएलएस से एस्टिमेट करेंगे। जब ओएलएस से एस्टिमेट करेंगे तो हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड फॉर्म आ जाएगी। और आपको पता है कि ये सिग्मा और यू एक दूसरे की प्रॉक्सीज है। सिग्मा अननोन होता है तो हम यू से उसको मेजर करते हैं। तो सिग्मा इज रिप्लेस विद यू और बाकी सारा का सारा मॉडल जो है ना, हैट का मतलब है ये अब एस्टिमेटेड मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे भी बीटा के साथ हैट लगना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लगाया हुआ, और वी के साथ भी वी हैट लगना चाहिए था अगर ये एस्टिमेटेड मॉडल है। ठीक है, सो वी एस्टिमेटेड दिस मॉडल। और उसके बाद हमने क्या करना होगा भाई, अगर हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी को आपने डिक्लेयर करना है तो आपने क्या करना है, इस बीटा की सिग्निफिकेंस को चेक करना है। इफ बीटा टर्न्स आउट टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इट वुड सजेस्ट दैट हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी इज प्रेजेंट इन द डेटा। इट टर्न आउट टू बी इनसिग्निफिकेंट, इट मे एक्सेप्ट द assumption ऑफ होमोस्कैडेस्टिसिटी। देखा, ये वही बात मैं आपसे बता रही हूँ। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस मेथड एज वेल। और इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि जी वो कहते हैं कि जी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, तो आप तो बेसिकली ओएलएस इसलिए अप्लाई इसलिए कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि जो वी आई है ना उसमें कोई हेट्रो का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वी आई होमोस्कैडेस्टिक है। लेकिन जो एम्पिरिकल स्टडीज है वो ये शो करती हैं कि पार्क टेस्ट ने ये गलत असम्पशन ली हुई है, जो वी आई है ना उसमें अगर हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी भी मौजूद हुई तो इसका मतलब है ये सारा टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। ये इसमें क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उसके बाद ये पार्क टेस्ट किया हुआ है, उसी तरह से ये मॉडल को रिप्लेस किया हुआ है। ये देखो, ये लॉग ऑफ यू हेड का मॉडल किया हुआ है, ये बीटा कोफिशिएंट है, ये इसकी स्टैंडर्ड एरर है, और ये इसकी टी वैल्यू है। टी वैल्यू जो है वो लेस देन 2 IV है, इसका मतलब है एच नॉट आप रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करने का मतलब है एच नॉट क्या था कि ये जीरो है, तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा टेस्ट है ग्लेस्टर। पार्क ने तो सिर्फ एक फंक्शनल फॉर्म दिया ना जो कि सिग्मा आई और एक्स को लिंक करता है। ग्लेस्टर ने मल्टीपल फंक्शनल फॉर्म अप्लाई किए। उसने कहा कि भाई ये पॉसिबल रिलेशनशिप है जो यू में और एक्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये सारे हैं। ठीक है, तो आप अपने मॉडल को सपोज करो ये वाला है, तो आप इसको इसी तरीके से जिस तरह से आपने पहले किया ना उसी तरह से करो। अगेन इस मेरिकल और प्रेडिकल मेट्रिकल वन में यूज ग्लेस्टर एप्लीकेशन अप्रोच, but Goldfield and Quant pointed out that the error of VI has some problem and it is expected to have non-zero and serially correlated। इसमें कहा सीरियल कोरिलेशन का मसला है, तो इसका मतलब है कि वो हेट्रोस्कैडेस्टिक है, और यानी इसमें हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी का प्रॉब्लम है। फिर उसने फर्दर ग्लेस्टर ने ये दो किए सजेस्ट रिलेशनशिप, लेकिन इसमें क्या मसला है, इसमें एक ही मसला है कि ये नॉन लीनियर इन पैरामीटर है। देखो बीटा वन बीटा टू अंडर रूट में आ रहा है, तो हम इसको वैसे ही ओएलएस से नहीं कर सकते। तो ये सारे मसले ही मसले। उसके बाद जो है फर्दर जो है स्पीयरमैन्स एंड रैंक टेस्ट है, ये आप खुद गो थ्रू कर ले, इसमें आपको समझ आ जाएगा। और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये दो टेस्ट है, जो पार्क टेस्ट है और वो। फिर गोल्डफिन क्वाड ने अपना भी टेस्ट प्रेजेंट किया, उसमें उसने बड़ा लंबा सा मेथड बताया कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें,
कोई एक एक्स ले लें, यानी आपको ये बाइवेरिएट मॉडल है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपकी यूआई में हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी है। तो आप क्या करो कि आप ना ऐसा करो कि जो आपका डेटा है ना उसको एक्स के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सॉर्टिंग करते हैं ना जैसे एक्सेल में, तो पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब इस डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करो, तो दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना है कि मिडिल की कुछ वैल्यूज जो है ना उसको छोड़ देना है, कुछ 4-5 वैल्यूज को छोड़ देना है, और उसके बाकी ऊपर और नीचे दो इक्वल साइज के आपने डाटा को ले लेना है। उन दोनों डाटा को अलग अलग ओएलएस से एस्टिमेट करो, दोनों से रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालो, पहले वाले को RSS1 कह दो, दूसरे वाले को RSS2 कह दो, और इनको पूरा मिला के RSS1 और RSS2 को जमा कर ले तो RSS बनेगा। फिर इसको करना क्या है, देखो ये मैं स्टेप्स लिखे हुए हैं। ऑर्डर द रैंक ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, ओमिट सी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन वे सी स्पेसिफाइड अ प्रायरी, मतलब पहले से बताया हुआ क्राइटेरिया, भाई 10 करनी है डिलीट, या 12 करनी है, या 5 करनी है। डिवाइड इंटू n-c जो आएगा ना उस ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट्स में, यानी n-c/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद रिग्रेशन निकालो दोनों का, ठीक है, RS1 और RS2, और दोनों को जमा कर लो तो वो RSS आ जाएगा जो मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद दीज RSS ईच हैव n-c/2 - k, यानी देखो n-c/2, तो ये डाटा है ना इसका जो n है ना, अब वहां पे n-c/2 बन जाना डाटा का। तो वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, n-k होती है, लेकिन क्योंकि अब डाटा जो है उस रिग्रेशन का वो n-c/2 है, तो उसी में से k सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला ही है विद न्यू नंबर ऑफ डेटा। तो कह रहे कि ये डिग्री, ये जो आपका है ना ये RSS, इट विल फॉलो दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इससे जो है हम एक टेस्ट बनाते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं लेमडा। वो लेमडा किसके बराबर होता है, RSS2, ठीक है। RSS2 क्या है, द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द सेकंड सेट ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी है, ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये इसी से सिंप्लीफाई करके निकाली हुई है, और डिवाइडेड बाय RSS1। RSS1 क्या है, जो वो आपने दो हिस्सों में डेटा डिवाइड किया था उसी का पहला सेट, और उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो ये जो डेटा है ये किसको फॉलो करता है, इफ UI assumed to be normally distributed and if the assumption of homoscedasticity is valid, then it can be shown that lambda follow the F distribution with numerator and denominator degree of freedom each, ये एक ही जैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये तो हम पहले से हमें पता है कि लैम्डा अगर एफ को फॉलो करता है तो एफ के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर की चाहिए होती है, डिनोमिनेटर की चाहिए होती है। यहाँ पर दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, V1 और V2 जिसे हम कहते हैं, और साथ में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए होता है। तो सारी चीजें मौजूद है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करो, H0 क्या बनेगा, देयर इज नो हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी। H2 क्या बनेगा, H1 क्या बनेगा, देयर इज हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी। और जिस तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा उस बेसिस पे हम डिक्लेयर करेंगे कि आपका डाटा जो है इट कंटेन्स हेट्रो प्रॉब्लम और नॉट। तो इस टेस्ट को क्या नाम था, गोल्डफील्ड एंड क्वांट टेस्ट, ठीक है। ये सारा वही मेथड लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये इन्होंने करके दिखाया हुआ है, इसको आप देख लेना एग्जाम्पल को। सो वी आर एक्चुअली डन विद हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी इशू, कि हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी क्या होती है, ओएलएस पे कैसे इफेक्ट करती है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ओएलएस के एस्टिमेशन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और अगर सिग्मा नोन हो तो क्या करते हैं, और सिग्मा अननोन हो तो क्या करते हैं। सिग्मा नोन हो तो हम मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके GLS बना लेते हैं, और अगर सिग्मा अननोन हो तो फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से, और उसके बाद फिर हम उसको रिमूव करते हैं और फिर हम उससे OLS एस्टिमेशन करते हैं। तो ये तकरीबन वी आर डन, ये इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी आर डन विद हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी प्रॉब्लम। थैंक यू। दिस वन पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। अगर तो हमें हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी में उसका फंक्शनल फॉर्म सिग्मा स्क्वायर नोन हो तो हम GLS कर लेते हैं, लेकिन इफ द otherwise on the basis of OLS residual one can make educated guess of the likely pattern of heteroscedasticity and transform the original data in such a way that the transformed data there is no heteroscedasticity। तो आपकी जो ये फॉर्मल या इनफॉर्मल मेथड है ये एक गेस वर्क ही होता है, इसे कभी किसी मेथड से सोल्यूशन आ जाता है और कभी किसी से आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हेट्रोस्कैडेस्टिसिटी की फॉर्म क्या है। एंड वंस यू गेट टू नो एंड वंस यू know it, or once you have educated guess of it, you transform the data and then apply OLS on that transformed data. This is what we do in heteroscedasticity problem.